So last class हम देखिଥିଲେ what is Gauss law, proof of Gauss law and derivation of Coulomb's law from Gauss law. आज क्लास रे हम डिस्कशन करिवा application of Gauss law. Okay, first application, electric field intensity due to a line charge. Okay, so the example of line charge is a thin and long rod charged with a uniform linear charge density lambda. Okay, which is as shown in figure, which is as shown. Okay, so this is a thin and long rod which is charged with the uniform linear charge density lambda. Okay, we have to find the electric field intensity at any point P the electric field intensity at any point P. Okay, the electric field intensity at any point P at perpendicular distance R from the axis of the rod. Okay, now draw a circular cylinder. Of radius R and arbitrary length L. Coaxial with the rod
which is it's shown in figure. Okay, so dry circular cylinder of radius r and arbiter length L coaxial with the thin rods. Okay, now this cylindrical surface is our Gaussian surface enclosing the charge Q. Then this circular cylinder then this circular cylinder is our Gaussian surface and since the Gaussian surface must be closed, since the okay must be closed, so the two end caps are part of the Gaussian surface. So the cylindrical surface is our Gaussian surface, and since the Gaussian surface is closed, so these two end caps are part of the Gaussian surface. Okay, so the total electric flux through the Gaussian surface must be equal to the algebraic sum of the fluxes due to the two end caps and the cylindrical part of the Gaussian surface. So the total electric flux through the Gaussian surface is the algebraic sum of fluxes, due to two end caps and cylindrical part of the Gaussian surface Gaussian surface. Okay, so for all points on the left and right cap, here the direction of the surface area along this direction and the direction of electric field is along this direction. That means the angle between E and ds is 90. So the total electric flux is phi equal to E dot ds. So
सो ईडीएस cos 90 सो cos 90 इक्वल 0 सो 0 हो एई जगह रे जो एंड कैप रे हां कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा हमरो 0 हो काई कि ई आउ डीएस भीतर एंगल होचे 90 ओके सो for all points on the left or right cape on the left or right cape the angle between E and area element vector ds is 90 okay therefore the electric flux through the cape is 0 okay. That is integration of E dot ds equal 0 for end caps ହେଲା सो कौन है ना एंड कैप रे कौन होची एटा होची डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ एटा होची डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ओके ई और डीएस विथ एंगल 0 सो हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केता हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डीएस इक्वल टू 0 हो जो सो एटी मध्य 0 हो जो फ्लक्स एटी मध्य 0 रहयो आ कोड रहयो आ कोन रहला ना सिलिंड्रिकल पार्ट रे केते फ्लक्स रो चेम बाहर करबा एटा से नंबर 1 दियो से नंबर 2 दियो the magnitude of E on the cylindrical surface it's same at every point and is directed radially outward from the axis है किंतु कौन है आमर जो सिलिंड्रिकल पार्ट रहा ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट रहा ये कौन हो डायरेक्शन ऑफ ई हाँ यहाँ हूँ डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस ए सिलिंड्रिकल पार्ट रो सो ए पार्ट सिलिंड्रिकल पार्ट रे एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज 0 जेहेतु से पैरेलल लेगी अच्छा से ये केवल फ्लक्स रही जगह एंड केप रे फ्लक्स टा हमरो 0 हो सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन टोटल फ्लक्स ड्यू टू द एंड केप्स एंड ड्यू टू द सिलिंड्रिकल पार्ट सो एंड केप रे 0 हो जेहेतु ई डॉट डीएस इक्वल 0
ए और ds जेतु 90 डिग्री सो ए ds इक्वल 0 हो जो सो ए जगह 0 ए जगह 0 केवल ए जगह ही फ्लक्स रोज हला radial outward from the axis here yeah. The angle between E and area element vector ds is 0 जेतु E और ds parallel से जगह रे no angle between E and ds is 0 so is cylindrical part kon am flux right therefore only flux is through the curved path of the cylinder is through the curved path of the cylinder and it's given by phi e equal to integration of ओके जेतु इटा कांस्टेंट होची सो हम ताको बाहर कर दवा cos 0 equal 1 so e into integration of ds हला और phi e equal केते हबो e into integration of ds केते गोटा सिलिंडर पे सरफेस एरिया होची 2 pi rl so हम पकेवा e into 2 pi rl ओके এটা দিও ইকুয়েশন নাম্বার 1 হলো বুঝুছি বাট অ্যাকর্ডিং টু গস লা আমরা কেতে আসিও বাট according to Gauss law phi e equal करते हैं q by epsilon 0 है अच्छा हम जानते हैं linear charge density lambda equal to q by l charge per unit length और q equal करते हैं q equal to lambda into l आसियो so ये q बदले lambda l पकाई दियो lambda l by epsilon 0 है এটা দবা আমি ইকুয়েশন নাম্বার 2 হলা সো फ्रॉम ইকুয়েশন 1 and 2 हम কেতে পাইবা সো phi equal to into 2 pi rl ইকুয়েশন 2 রে phi equal to lambda l by epsilon 0 সো ইকুয়েশন 1 और 2 যদি कंपेयर করিবা আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড রে ইকুয়াল হইছো दैट इज into 2 pi rl equal to lambda l by epsilon 0 हला और सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 kita suo e into 2 pi rl equals la lambda l into lambda l by epsilon 0 और e equal kete suo
1 by 2 pi RL into lambda L by हला सो एल एल कटिज और इक्वल के आसला 1 by 2 pi epsilon 0 into lambda by R. So इटा होचे हमरो expression for E. Alright, this is the linear charge distribution. Oh, or this is the electric field intensity due to a line charge. Equation 3. So equation 3 is the expression for the electric field intensity for the electric field intensity due to line charge, which is a very very important question. Electric application of Gauss law. चलो so हमरा केमती मोट क्या होता है डिस्कशन कर दूची. So this is a application of Gauss law. What is electric field intensity due to line charge? So the example of line charge is a thin and long rod. It is a thin and long rod with a uniform linear charge density lambda. Charge per unit length lambda equal to Q by L, which is as shown in figure. आमे कौन करिया P point electric field intensity बाहर करिया. We have to find the electric field intensity at point P. P टा कौन होची R to axis of the line charge to R दूरता रच. At perpendicular distance R from the axis of the rod. बर्तमान कौन करिया हम गोटे cylindrical surface draw करिया. Now draw a circular cylinder of radius R and arbitrary length L. Coaxial with the rod, which is shown in figure. हम कौन करिया गोटे cylindrical surface नवा जार length L और radius R. It is coaxial with the rod of uniform charge. Then the circular cylinder is our Gaussian surface. जेहेतु ए भितर चार्ज एनक्लोज होई रहउची, cylindrical surface भितर चार्ज एनक्लोज होउची. So cylindrical surface होउची हमर Gaussian surface. Okay. Charge enclosed by the surface is known as Gaussian surface. Gaussian surface का कहबा जदि surface भितर जदि चार्ज के एनक्लोज रहला त हम Gaussian surface कहबा. जेहेतु ए cylindrical surface भितर हमर चार्ज रहउची, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म linear charge density रहउची त हम कोन कहबा गोटे Gaussian surface ले कहबा. Okay. So then the circular cylinder is our Gaussian surface. Since the Gaussian surface must be closed, so the two end caps are part of the Gaussian surface. Gaussian surface must be closed. It is a closed surface. So it has the end cap. It has the end cap. It has the end cap. These two end caps are part of the Gaussian surface. Okay. So what are total electric flux through the Gaussian surface? Total electric flux total electric flux on the Gaussian surface is the algebraic sum of या दे केते फ्लक्स पास करछि केते इलेक्ट्रिक लाइन पास करछि यार फ्लक्स प्लस यार फ्लक्स आ प्लस यार फ्लक्स कहीं गॉसी जो सिलिंड्रिकल सरफेस का को नहीं तयारी छि एई सरफेस एटा एंड कैप को जोछि एटा मते एंड कैप ई दिडा एंड कैप प्लस ई जो सिलिंड्रिकल पार्ट रहला बा कर्व्ड सरफेस रहला याकु नै टोटल फ्लक्स इज ड्यू टू द टू एंड कैप प्लस द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस हमें वर्तमान को करिया एडी केते फ्लक्स रोच बाहर करबा एडी केते फ्लक्स रोच बाहर करबा आ ई सिलिंड्रिकल सरफेस रे हां केते फ्लक्स रोच बाहर करबा सब जो फ्लक्स बाहर करला पर सब जगह ऐड करबा हला so the total electric flux through the Gaussian surface is the algebraic sum of fluxes due to two end caps and cylindrical part of the Gaussian surface. Okay.
अच्छा बर्तमान यही जगह केते फ्लक्स हम देख यही जगह कौन होची इडा होची सरफेस रे डायरेक्शन आ इडा होची जेतु चार्ज पार्टिकल रोची इडा होची इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड सो ए ई और डीएस भितर एंगल केते हिला 90 हिला सो जदी 90 हिजो फाई इक्वल केते फ्लक्स इक्वल ई डॉट डीएस सो ई डीएस cos 90 इक्वल 0 सेति फाई इक्वल 0 हिजो बुझला फाई इक्वल हम जान इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल ई डॉट डीएस ओके ई और डीएस सहित एंगल 90 सेति में ये कोन जो ई डीएस 0 हिजो एडी मते सेमिति ई और डीएस सहित एंगल 90 एडी मते फ्लक्स 0 हिजो सो फ्लक्स केवल कोट रहइबो एई जगह रे रहइबो हला ए जो सिलिंड्रिकल पार्ट भितर एटु एति भितर फ्लक्स रहइबो बुझौछि हम वर्तमान बाहर करिवा केते फ्लक्स कोड रहउछि सो लिखला फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट और राइट कैप हम द एंड कैप पढ़ले द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर डीएस इज 90 therefore the electric flux through the cap is केता E dot ds हां A dot B equal AB cos theta so E dot ds equal E ds cos 90 equal to 0 हेगला for end cap 0 हेजु बुझौछि 0 so the magnitude of E on the cylindrical surface is same at every point and is directed radially outward from the axis हला किंतु जो cylindrical surface रे कोन होछि ई cylindrical surface रे एटा जो cylindrical surface रहला एटा होछि डायरेक्शन ऑफ ई रेडियल आउटवर्ड आ एटा होछि सरफेस रो डायरेक्शन एडी ई और डीएस पैरेलल रोच ओके सो एडी फ्लक्स रहिबो तमरो केते रहिबो सो सिलिंड्रिकल पार्ट केते फ्लक्स रहउछि द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ऑन द cylindrical surface is same at every point and is directed radially outward from the axis here the angle between E and area element vector ds is 0 therefore only flux is through the curved path of the cylinder okay so phi E equal to E dot ds equal to E ds cos 0 हला जेतु E ला कांस्टेंट हम ताकू इंटीग्रेशन बाहर करथवा E into ds और E into सरफेस रे केते सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ सरफेस रे 2 pi rl E into 2 pi rl हला बट अकॉर्डिंग टू गॉस ला केते जानछ तमे बट अकॉर्डिंग टू गॉस ला phi equal हम जानछ q by epsilon 0 हां और हम जानछ लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल q by l चार्ज पर यूनिट लेंथ और q इक्वल लैम्बडा l हला सो q बदले पड़ला लैम्बडा l by epsilon 0 बर्तमान देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आउट टू देखो इक्वेशन 1 रे phi इक्वल E into 2 pi rl इक्वेशन 2 रे phi इक्वल टू लैम्बडा l by epsilon 0 इक्वेशन 1 और 2 जदी कंपेयर करबा हमर राइट हैंड साइड रे इक्वल हबो दैट इज केता आसला E into 2 pi rl equal to lambda l by epsilon 0 और E equal केता हो 1 by 2 pi rl into lambda l by epsilon 0 L well कटला 1 by 2 pi epsilon 0 lambda by r हला एटा होछ तमर कोन आसला this is the so equation 3 is the expression for the electric field intensity due to line charge हला एटा होछ तमर application of Gauss law electric field intensity due to a line charge हला That very very important question आउ या देगी तमरो एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसी परीक्षा रे तासे तो याकु ई परिडा दिन से बुझले ही आकु बेस करी शॉर्ट क्वेश्चन उडा करि परिबो आउ आकु बेस करी न्यूमेरिकल छुडा मत तमे कर